Hello and welcome everyone. Myself CMA Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA Inter paper number 6 syllabus 2022. In that, financial statements of commercial organization and partnership firm. So today we are going to solve illustration number 10 till question number 9 we have already seen, and from question number 10 onwards there is a partnership firm question. So let's start illustration number 10. From the following particulars, prepare the final accounts of Messrs X and Y for the year ended 31st March 2022. So basically till question number 9 we have seen sole trading concern. Okay, in that we were preparing trading account, P&L account and balance sheet. Okay, but here in this question, due to this partnership firm, see Messrs X and Y, it means two partners are there, X and Y. So due to this partnership firm we are going to prepare trading and profit and loss account. Okay, you can make it separately also, but I have just drawn combined, that is trading and profit and loss account. Thereafter, in sole trading concern, directly there was a balance sheet, but here in partnership firm we are going to prepare profit and loss appropriation account, then partners capital account and then balance sheet. Okay, so here two accounts are extra, that is profit and loss appropriation account and partners capital account. The purpose of profit and loss appropriation account is, see that whatever things we are going to pay to the partners, we will record in profit and loss appropriation account. For example, interest on capital, interest on drawing we are going to charge, so that everything is recorded in the profit and loss appropriation account. Salary to partner, commission to partner, okay, distribution of profit to the partners, everything is recorded in the profit and loss appropriation account. Okay, and then partners capital account, we know that all the details of partners capital will be recorded in your partners capital account. Okay, let's start. It's a very basic question. Let's start. First of all, trial balance. Okay, sales, sorry, it's not a trial balance, it is just a information. Okay, here no total is given, it means this is not a trial balance. Okay, so sales, then opening stock, loan debit, it means loan taken nahi, loan given. Okay, so it is a loan given means asset. See here it is asset because it's a debit. Then wages, we know that carriage inward trading debit. Okay, return inward is nothing but your sales return, so sales में से माइनस. देन फर्नीचर एंड देन ड्राइंग्स आपका यहाँ पे देखो, ड्राइंग्स नॉर्मली इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न कैपिटल में से माइनस होता है, बट यहाँ पे ड्राइंग्स आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, ड्राइंग डी डेबिट. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ड्राइंग always has a debit balance, so drawing D debit, partners capital account debit. ठीक है, so here capital debit, then cash we know that asset, then land purchase, interest credit मतलब profit and loss credit. Okay, profit and loss credit, then salary, carriage outward, see carriage inward trading debit, carriage outward profit and loss debit. Okay, in this question this is not a trial balance, debit and credit item are given in a mixed way, so you have to identify which balance is there. Okay, so interest is credit, it means profit and loss credit, that is income, but carriage outward is always a expense, so profit and loss account debit. Okay, then next return outward is nothing but your purchase return, so minus from the purchases. Then trade charges. Okay, see trade charges are given, so it will go to the profit and loss debit, and capital C. Okay, C, it means it has a credit balance, so partners capital account credit. Okay, partners capital account credit, capital account के credit में जाएगा. So it's very simple to record the balances. Now we will go for the adjustment. Closing stock, we know that trading credit and balance sheet assets, it's a very basic adjustment. Then provide interest on drawing. Okay, so interest on drawing पे आपको interest ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, इज ऑफ 6 months. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट ड्राइंग इंटरेस्ट आर चार्ज फॉर 6 months ओनली. ओके,
because there is a common sense that from the starting of the year we never do the drawing, in between we do the drawing. So that's why on an average 6 months interest is charged. Okay, ईयर स्टार्ट होते ही कोई भी ड्राइंग नहीं करता है नॉर्मली, बीच बीच में कभी कभी रिक्वायरमेंट रहेगा तब ड्राइंग्स किया जाता है, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए मनी लिया जाता है, इसीलिए ड्राइंग का इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं आता है, ओनली 6 मंथ्स का आता है एवरेज बेसिस पे, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज इट इज़ फुल ईयर. ओके, सो देर इज़ द एडजस्टमेंट ऑन योर ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन drawings and capital, but there is no need to tick because we have prepared the capital account, so there is no need to any tick. Okay, then why I am writing the effect here. ठीक, ड्राइंग्स का इफेक्ट क्या आएगा, देखो ड्राइंग्स का इफेक्ट, देखो ड्राइंग आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सो ऑब्वियसली उसका एक इफेक्ट आएगा कैपिटल डेबिट. ओके, एंड अनदर इफेक्ट, यहाँ पे डेबिट है तो P&L में कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट. ओके, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम फॉर द फर्म एंड दिस इज द फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म, नॉट ऑफ द पार्टनर्स. ओके, तो यहाँ पे फर्म का चल रहा है फाइनल अकाउंट, तो फर्म के लिए इनकम क्या है वो देखना है. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम फॉर द फर्म, सो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, एंड here it is credit, it means partners capital account debit because drawing is in debit, so interest also is in will be in debit. Okay, इसका एग्जैक्ट उल्टा इफेक्ट कैपिटल का आता है. कैपिटल कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट, सो ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा उसका इंटरेस्ट, यहाँ पे क्रेडिट में है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बिकॉज इट्स अ एक्सपेंस फॉर द फर्म. ठीक है, इट इज़ फॉर 6 months, it is for whole year. Now why is to get the salary 400 per month. Okay, 400 per month, it multiplied by 12 months. Okay, 4,800 whatever amounts you are giving to the partner. Okay, you are giving as a firm, you are giving to the partner is going to receive. Okay, so उसके कैपिटल में ऐड होते जाएगा. Okay, so whatever things you are giving them, it is capital credit. Okay, capital credit, and this salary is the expense for the firm, so profit and loss account debit. Okay, then commission, X is to get commission at the rate of 2% on gross sales. Gross sales means return minus करने से पहले gross amount, बड़ी amount. Okay, 8,20,000 into 2% बोला है 16,400. Okay, I am just taking all the amounts calculation here only so that while solving the question it will reduce our time. This commission firm is going to give to the X, so same effect, capital credit and profit and loss debit. Okay, remember that wherever profit and loss is written, means here profit and loss, it is nothing but profit and loss appropriation. Okay, just for space purpose I have written P&L. Okay, but here it is profit and loss appropriation. Okay, I am writing here only profit and loss appropriation. ठीक है, because I have already told you that whatever things are relating to the partners we are going to record in appropriation account. Okay, ये सारी चीज़ें पार्टनर से रिलेटेड है, तो आई थिंक आपको ये मैंने पहले ही बताया है, तो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. ओके, सो यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बिकॉज कैपिटल, ड्राइंग, एवरीथिंग इज रिलेटिंग टू द पार्टनर्स, सैलरी, कमीशन रिलेटिंग टू द पार्टनर्स, सो अप्रोप्रिएशन. ओके, देन 50% of the profit is transferred to the reserve. This is also profit and loss appropriation only. So 50% आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है. ठीक है, ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से निकाल के आपको रिजर्व में रखना है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट एंड, ओके, ये हो गया डेबिट इफेक्ट. अब एक क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा. ओके, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व कहाँ पे जाता है, लाइबिलिटीज़ में. ओके, आफ्टर कैपिटल वी हैव टू रिकॉर्ड इट, सो इट विल गो टू द लाइबिलिटी साइड. देन डेप्रिसिएशन वी नो दैट माइनस एंड नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है. सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे टिक कर दो.
Okay, partners share the profits and losses equally. Okay, profit sharing ratio is given equally. दो partner है, इसका मतलब 1:1. 1:1 is the ratio. Okay, so here I have explained you the entire question. Now we are going to record all these items in our format. First of all, sales. Okay, 8,20,000 inner. Trading debit. Then opening stock 3 lakh. Outer, because no tick, outer. Then next is loan, but it is debit. Debit means asset, 20,000. Okay, it means it is a loan given, not a taken. So I am writing here loan given. 20,000 outer, no adjustment, outer. Next, wages is given. I am completing this side. Wages is given, that is 60,000, no tick, so outer. Again, carriage inward is also trading debit. Both these items will trading debit, 60,000 and 4,000. ठीक है, wages, carriage inward, done. Then return inward. Return inward मतलब सेल्स रिटर्न. ओके, सो सेल्स में से माइनस. $4,000. So here 8,16,000. It is just like your trial balance because these are the balances, but there is a difference in trial balance and these balances because trial balance debit side, credit side is always they give and it is tally, but here everything is mixed, so it is not a trial balance but these are the balances, so it will be recorded only once, so एक ही effect आएगा. Then furniture asset 10,000. नेक्स्ट है आपका ड्राइंग्स, जो जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में. ड्राइंग डी डेबिट, याद रखना है. ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स. एक्स के कॉलम में एक्स का अमाउंट 12,000 एंड वाई का 10,000. ठीक है, देन cash asset 3,000. So here I have completed this side. Now this side, land 11,000, no adjustment, outer. Then purchase, that is 3,80,000 but inner because there is a return. Done. Thereafter इंटरेस्ट क्रेडिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा 1,000. प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो यहीं पे इतना हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट अज्यूम करते हैं, नीचे अपना प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा. ओके, सो हियर आई एम ड्रॉइंग द लाइन so that you will get identification that here profit and loss account is getting started. Okay, so this is trading and this is P&L. ठीक है, account credit, that is interest. Credit it means income, so that's why credit में जा रहा है profit and loss के. See, this is a normal interest, not a partners related. partners related रहेगा तो appropriation में जाएगा, normal रहेगा तो P&L में जाएगा. ठीक है, salary debit, carriage outward debit, P&L. Okay, 40,000, 2,000. outer, done. Then return outward 3,000, it means it's a purchase return.
3000 का परचेस रिटर्न है, $3,77,000. Next, trade charges, profit and loss debit because these are the expenses, 8,000. उसके बाद है लास्ट आइटम कैपिटल के बैलेंसेस एक्स एंड वाई के. कैपिटल है मतलब क्रेडिट में जाएगा 24,000 एंड 16,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 16,000. Done. So here we have completed all the items. Then closing stock, that is 1,20,000. Trading credit balance sheet assets, very simple. 1,20,000 trading credit, balance sheet asset, done. Then next, provide interest on drawings on an average 6 months. Okay, first percentage is of drawing 6%. 6% is for entire year. We want only for 6 months. Okay, so 6% is for entire year. It means 3% is for 6 months ना, half. You can take directly 3%. ठीक है. So interest on a drawing, हाँ इफेक्ट ड्राइंग डेबिट में आता है तो उसका इंटरेस्ट भी कैपिटल के डेबिट में आएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में जाएगा. ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं पहले. सी ड्राइंग्स यहाँ पे. सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके, एट द रेट ऑफ 6% फॉर पर एनम. इट मीन्स 3% फॉर 6 months. ओके, डायरेक्टली 3% भी कर सकते. देखो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 3%, 360. और यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3%, ओके, दैट इज 300. अदरवाइज आपको अगर 6% ही लेना है तो देखो 12,000 इंटू 6% कितना है 720. बट दिस इज फॉर एंटायर ईयर. वी वॉन्ट फॉर 6 months. सो मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12, 360 आया ना, इसीलिए मैंने रेट ही हाफ कर दिया. ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, दिस इज फॉर एंटायर ईयर. सो मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12 मंथ्स कितना आया 300. सो इसीलिए मैंने परसेंटेज ही हाफ कर दिया. ठीक है, हाफ ईयरली. सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट कैपिटल के डेबिट में. अभी सेकेंड इफेक्ट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में. ठीक है, एक जगह पे डेबिट, दूसरी जगह पे क्रेडिट. एक लाइन छोड़ना है ताकि इधर का प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र कर सकेंगे. ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, एक्स वाई, एक्स का 360, वाई का 300, टोटल 660. ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड एडजस्टमेंट आल्सो. सॉरी, हाफ adjustment of second adjustment. Next, interest on capital, it is 4%. okay, here it is for full year. So 4% on interest on capital. See, capital is written on credit side. Okay, so here interest on capital at the rate of 4%. okay, यहाँ पे 6% नहीं करना है, मतलब हाफ नहीं करना है, पूरा लेना है. 24,000 because see capital is used for entire year, that's why interest is provided for the whole year. ठीक है, so multiplied by 4%, 960. here 16,000 into 4%, 640. okay, here it is on credit side. now we are going to record on debit side of P&L appropriation. so to interest on capital x y, 960, 640.
1600. Done. So here we have given both the effects. So here finally second adjustment is over. Now next, Y is to get salary 400 per month. 400 per month, it means annually it is 4800. ठीक है. So 4800 का effect देना है. Salary we are going to pay to Y. It means he is going to receive. So capital credit. Here it is credit. It means profit and loss appropriation में debit हो जाएगा. ठीक है. So by salary. ओके. किसको मिलेगा? सिर्फ y को मिलेगा. ओके. तो y का अमाउंट है 4800. सेम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा. टू सैलरी टू y. ओके. 4800 टोटल अमाउंट. ठीक है. देन डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, एवरीथिंग इज गिवन. नाउ नेक्स्ट, x is to get commission at the rate of 2% on a gross sale. ओके. ग्रॉस सेल मतलब ये फुल अमाउंट 8,20,000 के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको करके दिखाया. 2% इट इज 16,400 वी आर गोइंग टू गिव टू द x. ओके. सो सेम इफेक्ट आएगा. देखो, कैपिटल क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. ओके. कमीशन 16,400 to commission to x. कैसे निकाला? 8,20,000 is the gross sale multiplied by 2%. It is 16,400. Okay. Done. So here we have completed fourth adjustment also. Now 50% of the profit is to be transferred to the reserve fund. Okay. But I don't know the amount of profit. So how can I transfer it now? अपने पास प्रॉफिट का अमाउंट ही नहीं है तो अभी हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. तो ये एडजस्टमेंट लास्ट में याद से करना पड़ेगा. ओके. ये एडजस्टमेंट लास्ट में करना है, याद रखो. अभी डायरेक्ट डेप्रिसिएशन पे चलते हैं. डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है. वेरी सिंपल. ओके. लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%. 10% मतलब 1000 आ जाएगा. 9000. एंड इसका सेकेंड इफेक्ट आपको पता है, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसके डेबिट में. सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000. ठीक है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एडजस्टमेंट्स. जस्ट रिमेंबर दीज टू थिंग्स कि 50% प्रॉफिट आपको रिजर्व फंड में डालना है एंड आपके पार्टनर्स, आप उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1 है. ठीक है. चलो ये सब बाद में, पहले क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है. चलो क्लोज करते हैं. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट. सो लेट्स टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. आई थिंक इट्स मोर. सो 8,16,000 प्लस 1,20,000. हियर वी आर गेटिंग 9,36,000. माइनस डेबिट वाले आइटम 3,77,000, then 60,000, then 4,000. It is 1,95,000. It's a correct. Two GP carried down. Now this GP brought down to the profit and loss account. Here debit, here credit. By GP brought down 1,95,000. ठीक है. Now take a total of credit side. It is 1,96,000. Credit side is more. Minus debit side 40,000, 2,000, 8,000, 1,000. It is 1,45,000. 1,45,000. Okay. This is a net profit of profit and loss account, but this profit will be transferred to next account, that is profit and loss appropriation account. Okay. So net profit transfer to
प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. Okay, so here it is debit, here we are going to take on credit side. Okay, कहाँ से लाया आपने ये बैलेंस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर ऐसे लिखा तो भी चलेगा. ओके, 1,45,000 1,45,000 डन. नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस अकाउंट. ठीक है, नाउ दैट एडजस्टमेंट वी विल डू but after calculating the profit. ठीक है, so take space here. Now take a total of credit side, 1,45,000 plus 660. So here it is 1,45,660, 1,45,660. Okay, minus debit items. Okay, that is 1,600, 4,800. नॉर्मल क्लोजिंग का प्रोसीजर चल रहा है और कुछ नहीं है. 16,400. ओके, आई एम गेटिंग द प्रॉफिट लाइक दिस. ओके, ये प्रॉफिट है. फाइनली हमें प्रॉफिट मिला है. अब ये एडजस्टमेंट करना है. ठीक है, 50% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड. दिस इज अ प्योर प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, all the appropriations, interest on drawing, capital, salary, commission, everything is deducted. So this is a pure profit. This profits 50% should be transferred to reserve fund. Okay, so यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व फंड करना है 50%, मतलब इंटू 50% कर दो, इतना रिजर्व फंड में डालना है. ओके, एंड ये एडजस्टमेंट है, इसके दो इफेक्ट आएंगे. ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा एंड लायबिलिटी में जाएगा. ठीक है, अमाउंट इज 61,430 टू रिजर्व फंड 61,430. ओके, कैसे किया? आपका जो प्रॉफिट आया था उसका 50%. प्रॉफिट कितना आया था? 1,22,860 मल्टीप्लाइड बाय 50%. ठीक है, सो हियर दिस इज अ फर्स्ट इफेक्ट. नाउ सेकेंड इफेक्ट, लायबिलिटी साइड. रिजर्व फंड 61,430. So here this adjustment is over. Now this adjustment, the partners share profits and losses equally. Okay, after transferring to the reserve fund, whatever amount remains with you should be transferred to the partners, that is shared by partners equally. Okay, so यही अमाउंट आएगा. बराबर, आपका देखो टोटल प्रॉफिट कितना आया था? 1,22,860. ओके, माइनस उसमें से इतना आपने रिजर्व में डाल दिया, तो बचेगा कितना? उतना ही रहेगा, क्योंकि 50% यू हैव ट्रांसफर्ड. ओके, सो यहाँ पे आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है एक्स, ये है वाई. 61,430. बराबर, इक्वली. ओके, इक्वली मतलब इसका आधा आधा हो जाएगा ना, तो डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं. ठीक है, सो इट इज 30,715, 30,715. डन. सो हियर इट इज ऑन डेबिट साइड. सो ये जाएगा किधर? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. बाय नेट प्रॉफिट. ओके, किधर से लाया है आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से. 30,715, राइट, 30,715. नाउ वी विल क्लोज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को पकड़ते हैं. एक्स का क्रेडिट का टोटल 24,000 प्लस 960 प्लस 16,400 प्लस 30,715. ओके, सो आपका टोटल आ रहा है 72,000 एंड 75. 72,000 एंड 75 माइनस डेबिट के आइटम. ओके, 12,360. टोटल बैलेंस इज 59,715. इसको बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन. स्टार्टिंग में BD मतलब ब्रॉड डाउन, यहाँ पे CD मतलब कैरिड डाउन. ठीक है, इधर 16,000 प्लस 640
plus 4,800 plus 30,715. It is total 52,155 minus debit के 10,000 minus 300. Okay, so balance is 41,855. This balance will directly go here, that is on liability side. Okay, we know that capital account always go to the liability side. So here capital account x y, x का बैलेंस है 59,715, y का बैलेंस 41,855. टोटल ले लो, आउटर में डालो. 59,715 प्लस 41,855, it is 1,01,570. ठीक है. Now we will check the tally amount. Okay, first of all liability side, 1,01,570 plus 61,430. Okay, so tally amount आ रहा है 1,63,000. एंड यहाँ पे असेट में 9,000 प्लस 11,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 प्लस 1,20,000. वी आर गेटिंग सेम अमाउंट, दैट इज 1,63,000. ओके, so here we have completed this illustration number 10. Okay, you have to remember that whenever partnership firm question is there, so you have to prepare trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, partners capital account and balance sheet. Okay, so here we have completed all those things, very basic question. Just remember that all other normal items will go to the profit and loss account only, but the items relating to the partners अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, दैट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, so here we have completed illustration number 10. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel playlist to get more videos on various topics, and also join the Telegram group to get the notes. Thanks for watching friends.